headlines now. Viewers, there seems to be no end to the politics over the Ayodhya Dhwajarohan ceremony. We are going to tell you about 4 Congress leaders who have injected the caste, religion as well as Nehru angle to criticize the Prime Minister for raising the Dharm Dhwaj. Congress MP Imran Masood dragged in the caste angle. He said Avdesh Prasad, the SP MP, was not invited for the ceremony because he is a Dalit. Congress's veteran Tariq Anwar has called today's Dharm Dhwaj event a publicity stunt. Not one to fall behind Mr. Udit Raj has commented that Prime Minister does not follow Ram's ideals and that is why he shouldn't have hoisted the Dharm Dhwaj. Joining the bandwagon is also Rashid Alvi, who's asking if the Prime Minister will hoist a flag on a mosque, a gurdwara or a church. He also says that the Prime Minister hoisted Dharm Dhwaj to reap political benefits and taunted that the Prime Minister should learn secularism from Nehru. Let's listen in to those comments back to back. किस हैसियत में प्रधानमंत्री जाके झंडा फहराना चाहते हैं एक मंदिर का? इस देश का कोई मजहब नहीं है। भारत देश का संविधान के मुताबिक कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है। क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे जाके? किसी गुरुद्वारे का, किसी चर्च का झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते और इसीलिए वो फहराएंगे ताकि आने वाले जो चुनाव है, खास तौर से यूपी का चुनाव है, उसमें उनको फायदा मिल सके। वो देश के धार्मिक जज्बात को भड़का के राजनीति करना चाहते हैं। मैं बड़े ऐसा है भाई, दलित हैं वो, इसलिए नहीं दिया होगा। अब ये तो बड़ी दुर्भाग्य है, लोकल सांसद को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के आगमन पर लोकल सांसद को भी निमंत्रण ना हो, इससे ज्यादा दुखदायी क्या हो सकता है। और अगर प्रधानमंत्री जी की हैसियत से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री की हैसियत से आएंगे ना, तो सबसे पहला तो हक वहां के सांसद का है, लेकिन वो दलित है इसलिए उसको बुलाया नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहते पब्लिसिटी का, प्रचार का। देखिए, ये काम तो धर्म गुरुओं का था, लेकिन प्रधानमंत्री विश्व गुरु भी बनना चाहते हैं, धर्म गुरु भी बनना चाहते हैं, प्रशासन के भी गुरु बनना चाहते हैं, हर चीज़ के गुरु बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस वो जानती है कि धार्मिक उन्माद पैदा किए बिना उनकी गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो समय समय पर जब कोई विधानसभा का चुनाव आता है, लोकसभा का चुनाव आता है, तो वो इस तरह की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। Maryada Purushottam has a values and highest values, but what values Modi ji has, and he made promise to youth of the country in 2014 that how many comes into power he'll give 2 crore jobs. The lawyer who betrays the cause, who doesn't adhere to his own words, is he worth or is he pious enough to hoist the flag? हम सब लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं, भगवान की आराधना करते हैं, बाबा विश्वनाथ की पूजा करते हैं, कण कण में विराजमान है बाबा। तो निश्चित तौर से उस पर मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, उसको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। हर आदमी जानता है कि भगवान की आराधना करना है, पूजा करना है और इसके लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। ये नई परंपरा शुरू किया है बीजेपी आरएसएस ने। भगवान के पूजा पाठ के लिए मंदिर बुलाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। मैं समझता हूं कि ये केवल मार्केटिंग हो रही है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है। बार बार एक ही चीज को लंबा करके ले जाना, इससे लग रहा है कि पूरा इवेंट कर रहे हैं। 3 दिन से चल रहा है इवेंट, निमंत्रण दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। क्या अरे भगवान के दरबार में निमंत्रण की जरूरत नहीं है। Let's now go across to my colleagues who are tracking the story closely. We have Niyamika as well as Adib live with us. Niyamika, to you first. Shocking comments there coming in from several leaders of the Congress party. Caste angle has also been injected now. Well, yes, indeed. There is a sharp dig which the opposition leaders have taken over Prime Minister Narendra Modi. And specifically, if we talk about the Congress leaders, then back-to-back reactions are coming in where they have given not just a communal angle, but also a caste angle in this entire story. As we have seen
that how the Congress Party's Lok Sabha MP Imran Masood has questioned this decision of the government for not inviting Avdesh Prasad by stating that this is a very sad state of affair, that only because he is a Dalit, that is the only reason why he was not being invited in this entire ceremony. On the other side, the Congress Party's other leaders, including Udit Raj, Rashid Alvi, as well as Tariq Anwar, they have taken a jibe over Prime Minister Narendra Modi by stating that on one side he wants to become the Vishwa Guru, on the other side he is also trying to become the Dharm Guru, because this was the responsibility which used to be given to the Dharm Gurus, that if any such kind of ceremony needs to take place, then it is going to be Dharm Guru who are going to do this. But it is only because of the upcoming assembly elections that this kind of a messaging is what a Prime Minister is trying to give. Niyamika, stay on with us. We have reactions coming in from leaders of the BJP as well. Listen in. गर्व की बात है जो आंदोलन वर्षों तक लाखों कार सेवकों ने जिस लड़ाई का उसका आज ध्वजारोपण होकर एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को बहुत आनंद है, बहुत खुशी है और आज हम सबको बहुत ही गर्व है कि ये काम शांतता से बड़े अच्छे तरीके से पूर्ण हुआ है. Let's now go across to my colleague Adeeb as well, who's joining us live right now for more on this. Adeeb, now, of course, BJP there defending, this particular ceremony and the way it was conducting. But talking about the opposition, of course, there is caste angle that has been injected. And also, opposition is trying to now suggest that, it's all being done keeping elections in mind. But UP elections are far away. Well, definitely, Hena, UP elections are very far away. It's about to happen in 2027, and what we are talking about, it's happening in 2025. The opposition is just seeing this as an opportunity to attack BJP, but the BJP says that the opposition party, especially Samajwadi Party and Congress, they are not happy with the kind of development project that is happening in Ayodhya, and especially about the Ram Mandir. Even the BJP leaders are saying that why Avdesh Prasad, who is the local MP from this particular seat, why does he need an invitation card? If he wants, he can visit Ram Temple anytime. But he only remembers Ram Temple for his politics. And that's the main reason Avdesh Prasad and other Congress leaders are talking like this now. Thank you very much, Niyamika as well as Adeeb. Appreciate both of you for joining us.